अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक एंड बेक विद फudgiest टीवी। आज की ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई हैं और शुगर भी डिज़ोल्व हो गई है, तो अब हम इसको अपने एक ग्रीस्ड मोल्ड के अंदर डाल देंगे। मोल्ड को मैंने ग्रीस करके इसके अंदर पार्चिंग पेपर लगा दिया था और अब मैं इसके अंदर सारा बैटर डाल रही हूँ। हमारा रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ही प्री हीट हो रहा था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट तक के लिए। केक रेडी हो गया, इसको मैंने चेक कर लिया था इसके अंदर नाइफ़ इंसर्ट करके। अब मेरे पास यहाँ पर चॉकलेट गनाश थी, वही रेसिपी है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। चॉकलेट 900 ग्राम और 100 ग्राम ml इसके अंदर मैंने क्रीम यूज़ की थी। इसको मैंने मेल्ट कर लिया, इकट्ठे कुक कर लिया। सारे केक को इसी तरह चॉकलेट के साथ कवर कर देंगे और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कैरेमल सॉस भी लगा दूँगी।
तो इसी के हम स्लाइस काट के इसको ब्राउनीज़ को कट कर लेंगे। आप रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आपकी परफेक्ट ब्राउनीज़ घर में रेडी हो जाएंगी। My mind